Today I will discuss about the coordinate geometry, class 11, subject maths, student for science and commerce. Chapter is straight line. First of all, I want to discuss about what is coordinate geometry and what is coordinate. A systematic study of geometry by using the algebra is called coordinate geometry. We can study the geometry with the help of algebra is called coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंदर हम अलजेब्रा के विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा आई कैन सॉल्व द ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. द अर्थ का मेजरमेंट जब अलजेब्रा के द्वारा किया जाता है, अलजेब्रा के कैलकुलेशन के द्वारा किया जाता है, so that is called coordinate geometry. And what is coordinate? Coordinate is a pair of real numbers in which first suffix denotes the distance on x-axis and second suffix denotes the distance on y-axis. You have read in class 10 already what is the meaning by coordinate. Coordinate means a pair of real numbers. For example, a pair of real numbers in which first suffix denotes the distance on x-axis and second suffix denotes the distance on y-axis. For example, let T be a point whose coordinates is 2, 3. X and y are two rectangular axes. O is called the origin of reference. In xy plane, we take P is a point whose coordinate is 2, 3 and draw PM perpendicular on OX and PN perpendicular on OY. PN. So, first suffix 2, 2, 3 is a pair of real numbers in which 2 denotes the distance on x-axis. And OM is equal to 2 units and PM is equal to 3 units. That is, OM is equal to, by the definition of coordinate, 2 units and PM is equal to 3 units. Therefore,
P का कोऑर्डिनेट जो है 2 3 है, जो डिनोट करता है P से परपेंडिकुलर डालेंगे OH पर और P से परपेंडिकुलर डालेंगे OY पर, तो फर्स्ट सफिक्स 2 है। The 2 denotes the distance on x axis from the origin, यानी OM हो गया 2 units and PM हो gaya 3 units. Now, I want to discuss about the slope of a straight line. Slope of a straight line. Slope of a straight line. Slope of a straight line is defined as the any straight line or non-vertical line. This straight line denoted by L. Any straight line which makes an angle theta with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, then tan of this angle is called the slope. कोई भी straight line पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई एक्यूट एंगल थीटा फॉर्म करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका tan ऑफ दिस एंगल, जितना एंगल बनाएगा उसमें tan लगा देंगे, तो tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड द स्लोप. फॉर एग्जांपल, दिस एंगल L makes an angle 45 degree with the x axis. तो tan 45 degree is equal to 1. It is the slope of this straight line. अगर कोई straight line x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो tan 30 डिग्री इज कॉल्ड द स्लोप. जितना एंगल बनाएगा कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन, जितना एंगल फॉर्म करेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसमें tan लगा देने से इट गिव्स द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. यानी ये थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज स्लोप. स्लोप इज डिनोटेड बाय m. स्लोप को m से डिनोट करते हैं. स्लोप कहिए या ग्रेडियंट कहिए. ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बोथ आर द सेम. तो m is equal to tan of 30 degree is equal to 1/√3. 1/√3 is the slope of this straight line, and tan theta is the slope of the straight line m, tan theta. यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन या नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा, उसमें tan लगा देने से tan of this angle is called the slope of this straight line. M is equal to gradient of this straight line. So we can find the gradient, we can find the slope of any straight line in two different ways. पहला केस है एंगल के केस में और दूसरा है कोऑर्डिनेट के केस में. वैसे when this straight line L, when this straight line L कांस्टेंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर L को रिवॉल्व करा के तो OX पर लिख किया जाए तो थीटा इज इक्वल टू 1 OL इज पैरेलल टू when L इज पैरेलल टू OX. यानी अगर L स्ट्रेट लाइन OX पर कोइंसाइड कर जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री. यानी स्लोप क्या हो जाएगा
उस केस में when any straight line makes an angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, then tan of this angle, tan of theta is called the slope or gradient of a line L. It is denoted by m is equal to tan theta. It is denoted by m is equal to tan theta. M is called the slope or tan theta is called the slope or gradient. अगर थीटा 0 हो जाए, लाइन L कोइंसाइड कर जाएगा वो x पर, तो थीटा इज इक्वल टू 0. When थीटा इज इक्वल टू 0, यानी L coincides with OX, then L coincides with OX. Therefore, M is equal to tan 0 degree is equal to 0. यानी x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, m is equal to 0. और स्लोप ऑफ y एक्सिस, और जब लाइन L y एक्सिस में कोइंसाइड करेगा, तो by the definition of the slope, any straight line when L coincides with OY, any straight line makes an angle with the positive direction of x-axis. X-axis से उसका एंगल जो बनेगा, तो this angle is 90 degree. अगर L इस पर चला, y-axis पर चला है, coincide कर जाए, तो theta is equal to 90 degree. When slope of y-axis is m is equal to tan 90 degree is equal to infinity. That is not defined. When L coincides with OY, यानी y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है और x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, और इसके बीच में कोई भी स्ट्रेट लाइन where theta is acute angle, theta is called acute angle. अगर थीटा का वैल्यू कोई भी स्ट्रेट लाइन साइड एंगल पर लगता है x एक्सिस के साथ, तो tan साथ उसका स्लोप हो जाएगा. अगर वो 30 डिग्री का बनाता है तो tan 30 स्लोप हो जाएगा. First of all, coordinate geometry was invented by the René Descartes in 1837. Now I want to discuss about the slope of the straight line. How can we find out the slope of the straight line
when 2 points are given on this straight line. अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा? Slope of straight line when two points are slope of the straight line when 2 points are lying on it. अगर 2 पॉइंट लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, फॉर एग्जांपल केस coordinate है x1 y1, this angle is theta, line L, P and Q are 2 points, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो x एक्सिस y एक्सिस और तीनों क्या इससे परपेंडिकुलर डाल दें, ये 90 90 90. Take P and Q are 2 points on the line L. When the line L makes an angle theta with the positive direction of the axis, and theta is an acute angle. So M N also L0. Draw PM perpendicular on OX, QN perpendicular on OX, and PN perpendicular on QN. Then by the definition of coordinate, by definition of coordinate, OM is equal to x1 and QN is equal to x2. Therefore, MN is equal to PL is equal to x2 minus x1. Similarly, by the definition of coordinate, PM is equal to y1 and QN is equal to
OM is equal to x1 and ON is equal to x2. ON is equal to x2. OM हो गया by the distance coordinate. OM is equal to distance on x-axis. OM हो गया x1, PM हो गया y1, ON हो गया x2 और QN हो गया y2. So therefore MN is equal to PL. तो MN can be written as ON minus ON, यानी x2 minus x1. x2 minus x1. Now PM is equal to y1 and PM is equal to y1 and QN is equal to y2. Therefore QN is equal to QN minus LN. ये y1 है, ये भी y1 है. The QN is equal to QN minus LN, यानी y2 minus y1. So this gives y2 minus y1 and this gives x2 minus x1. और ये थीटा, since PL is parallel to OX, therefore corresponding angles are equal. Therefore angle QPL is equal to theta. Since PL is parallel, this 90 degree and this also 90 degree. So since PL is parallel to X, therefore corresponding angles are equal and L is transversal, therefore the angle theta will be theta. Now from triangle QPL, take P and Q are 2 points on the line L. P का coordinate है x1 y1, Q का coordinate x2 y2. Draw PM perpendicular on OX and QN perpendicular on OX and PL perpendicular on QN. So by the definition of coordinate, ON का value हो गया x1, PL का value हो गया y1, ON का value x2 और QN का value y2. So since PL is parallel to OX, therefore corresponding angles are equal, and ये theta and ये angle theta. Now MN can be written as MN is equal to PL. तो MN को लिख सकते हैं ON minus ON और ON का वैल्यू है x2, ON का वैल्यू है x1. तो MN is equal to PL is equal to x2 minus x1. Similarly, PN is equal to y1 and QN is equal to y2. But PM is equal to LN is equal to y1. Therefore, QN is equal to QN minus LN, यानी y2 minus y1. Now from triangle QPL, from triangle QPL, tan theta is equal to P by P, perpendicular by base. तो थीटा के सामने जो होगा, this angle is 90 degree, the PQ is hypotenuse, QL is perpendicular and PL is called the base. So QL वाला PL, QL वाला PL, but QL का वैल्यू y2 minus y1 upon x2 minus x1, and tan theta is called the slope. Therefore, m is equal to tan theta. So this is called the slope of this straight line. If you want to find out the slope of any straight line which coordinates are given, two coordinates are given, then slope is equal to difference in y coordinate upon difference in x coordinate. अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है,
तो उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे बटा x कोऑर्डिनेट को माइनस कर, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बटा डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, यानी y2 minus y1 बटा x2 minus x1. So these two ways to find out the slope of the given straight line. एंगल के केस में हुआ, एक कोऑर्डिनेट के केस में. नाउ यहाँ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये थीटा हुआ एक्यूट एंगल व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज. Theta is obtuse angle. Take P and Q are 2 points. X1, Y1, X2, Y2. Draw perpendicular. ये 90 डिग्री है. Q ओरिजिन है, QN, PN. तो by the definition of coordinate, by the definition of coordinate, by the definition of coordinate, MN is equal to PL is equal to OM minus OM, ON minus OM is equal to X1 minus EX1 है, EX2 है, X1 minus X2 and QL is equal to QL is equal to ये y1 है, ये भी y1 हो जाएगा. QM is equal to y2 and LM is equal to y1. Therefore, QL is equal to QM minus LM and y2 minus y1. This angle is theta, which is obtuse, like greater than 90 degree and less than 180 degree. Therefore, this angle is denoted by 180 minus theta. Minus theta. Since PL is parallel to OX, therefore corresponding angles are equal. So this angle is also 180 degree minus theta. We want to find out the value of theta. मतलब tan theta. अब ट्यूथ के केस में उनको स्लोप फाइंड आउट करना है. तो फ्रॉम ट्रायंगल QPL, QLP, this angle tan x minus theta is equal to tan x minus theta is equal to this angle 90 degree and this angle x minus theta. Therefore हम x minus theta एक वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी QL बटा LP. QL का वैल्यू y2 minus y1 बटा और LP का वैल्यू, PL का वैल्यू x1 minus x2.
And therefore, but we know that tan XOC minus theta is equal to minus tan theta is equal to y2 minus y1 बटा x1 minus x2. XOC दिखती है, रेशो चेंज नहीं करता है लेकिन साइन में भी चेंज. XOC minus theta lies in second quadrant और second quadrant में tan इंडिकेट होता है. Therefore tan theta is equal to multiply minus 1 on both sides minus y2 minus y1 बटा x1 minus x2 is equal to y2 minus y1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x2 हो जाएगा. x2 minus x1. This is called the slope. n is equal to n. So the required slope of the straight line which makes obtuse angle with the positive direction of x-axis. So this denotes the difference in y coordinate but a difference in x coordinate. Conditions for parallel and perpendicular of lines in terms of their slopes. Conditions for parallel and perpendicular of lines. Now the question is that conditions perpendicular of lines in terms of their slopes, in terms of their slopes. When two lines are parallel, तो उसके स्लोप क्या होगा? And when two lines are perpendicular, तो उसका स्लोप क्या होगा? So when conditions को, what is the condition? When two lines are parallel, this condition. The conditions for parallel and perpendicular of lines in terms of their slopes.
L1 L2 ये अल्फा है, when two lines are parallel, जब दो लाइन पैरेलल हो, when L1 is parallel to L2, two lines are parallel, तो पैरेलल हुआ तो corresponding angles are equal. So when two lines are parallel, then corresponding angles are equal. Their OH is the transversal. Therefore, alpha is equal to beta. Corresponding angles are equal. Taking tan on both sides, tan alpha is equal to tan beta. Or tan alpha is called the slope of L1 and tan beta is called the slope of L2. Therefore, M1 is equal to M2. So when two lines are parallel, slopes are equal. M1 is equal to M2. And when slopes are equal, when M1 is equal to M2, therefore tan alpha is equal to tan beta. Therefore, alpha is equal to beta. These are the conditions of the parallelism of the two given straight lines. When जब दो लाइन पैरेलल हो तो corresponding angle इक्वल होगा, यानी alpha is equal to beta. Tan of taking tan on both sides, so tan alpha is tan beta. Tan alpha is the slope of L1 and tan beta is the slope of L2. इसलिए L1 बराबर है. दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका slope इक्वल होगा. और जब slope इक्वल हो तो एंगल जो बनता है दोनों स्ट्रेट लाइन का वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो इक्वल हो. corresponding angles are equal. When M1 and M2, M1 is the slope of L1. It is denoted by tan alpha. Tan alpha is equal to tan beta. Therefore, alpha is equal. So when two lines are perpendicular to each other, L1 is perpendicular on L2. ये अल्फा और ये हो गया L1 L2. Y-axis, x-axis, or z. When two lines are perpendicular to each other, yani the slope of the line L1 is tan alpha and the slope of the line L2 is tan beta. When the slope रहता है any straight line which makes an angle, acute angle alpha with the positive direction of x-axis. और ये ऑब्ट्यूज हो गया. बीटा ये ऑब्ट्यूज एंड अल्फा is acute angle. And now from triangle slope of L1, M1 is equal to tan alpha and M2 is equal to tan beta. This denotes the slope of L1. Slope of L1 will be a slope of L2. Now, चूंकि in triangle ABP in triangle ABP, exterior angle beta
ST angle beta, ST angle is equal to sum of two interior opposite angles. Therefore, beta is equal to this angle plus this angle, 90 degrees. So, ST angle beta is equal to 90 plus alpha. Therefore, tan beta is equal to tan 90 plus alpha. Tan beta is equal to tan 90 plus alpha is equal to minus cot alpha. Second quadrant में tan negative. और this can be tan beta is equal to minus a quarter tan alpha. And this implies that tan alpha into tan beta is equal to minus 1. Therefore, this implies that m1 into m2 is equal to minus 1. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है. When two lines are perpendicular to each other, their product of the slopes is equal to -1. Now you can solve the exercise which are based on this formula. Okay.